हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में आपन सहित +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 3 पार्ट 2 डिस्कसन करबा। यूनिट 3 पॉलिटिकल थ्योरी एंड पार्टीज किसी सिलेक्शन 2 मार्क्स क्वेश्चन हम डिस्कसन करबा। मैं पूर्व मध्य यूनिट 3 ऑलरेडी 2 मार्क्स सिलेक्शन किसी वीडियो अपलोड कर सारी। जब आप देखी ना तो चैनल देखिपारे आ वीडियो आपको कहबी जे आप पीडीएफ नोट्स को किपरि भाव पाई पारे। तो चलो स्टार्ट करिया। व्हाट इज यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रैंचाइज। तो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रैंचाइज माने कोन? अंडर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रोविजन दैट ईच सिटीजन ऑफ द स्टेट इज entails to vote at the election on attaining the prescribed age such as 18 years or 21 years without any discrimination on grounds of gender, race, caste, creed, religion, language, culture, etc. माने कोन? गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम रे प्रोविजन से कौन जो प्रोविजन दैट इज मैंने गोटे व्यवस्था रही है प्रत्येक नागरिक जो यूनिवर्सल फ्रांचाइज मैंने कौन भोट देवे बाध्य अटेनिंग करेंगे। आ जो बयस कौन प्रेस्क्राइब निर्धारण कौन हो 18 वर्ष 21 वर्ष जो निर्धारित बयस से भोट देवे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स कौन ग्राउंड्स रही जेंडर, रेस, कैस्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रांचाइज। नेक्स्ट टाइम देखिए कौन व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहले कौन बुझ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन मैंने राइट दूसरी इक्वालिटी प्रत्येक नागरिक को सम्मान भाव राइट देती इक्वालिटी ऑल आर इक्वाल बिफोर द लॉ। आईन है समस्त समान एंड देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ etc. इट मीन्स that the laws apply in the same manner to all मतलब समस्त सेम मैनर लॉ अप्लाई हो रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस मतलब पर्सन स्टेटस को छाड़ी समस्त मैंने जो लॉटा समस्त सेम मैनर कर दिस लॉ इज अप्लाइड इक्वली एंड फाइनली नो वन इज एबव द लॉ। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ माने कौन? द प्रिंसिपल व्हिच रिक्वायर्स दैट द लॉ ऑफ द लैंड should be properly defined and notified so that his citizens knows how it affects them. Any action on individuals should be taken only under that law and not on any other basis. Hence, no one should be irretrievably arrested nor punished without a free trial. तो ये रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट टाइम देखा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू नायक पुनः लोक in a country with a written constitution, judicial review refers to the power of higher courts to examine the validity of any rule, enactment, administrative order or action in the light of the provisions underlying principles or spirit of the constitution. If the court declares it to be unconstitutional, it will become null and void. जुडिशियल रिव्यू कले आम सिंपली कौन पूछे जब कौन आईन संविधान मैंने भाव पत्र संविधान एगेन्स्ट थी भली किसी आईन पास हो जाए जहाँफल कौन जुडिशियल रिव्यू माध्यम सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्ट से आईन को खारिज कर दिखाई। नेक्स्ट आम कौन देखा ओपन सोसाइटी। तो मुक्त समाज मान कौन? ए सोसाइटी वेयर देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, टू एक्सिस्टिंग ऑर्डर एंड टू रिफॉर्म और रिफॉर्मुलेटेड द existing institution by attaining public for the purpose of changes। तो कौन मुक्त समाज कहले कौन जो मुक्त समाज मैंने आम सब कौन इनफर्मेशन पाई पार्थ फ्रीडम आम जो से आम क्या कर गोटे आईन सरकारी क्रिया कौन संविधान को भाव बढ़ाई कार्य करते आ कौन अच्छी एक्चुअली इंस्टीट्यूशन बाय अटेनिंग पब्लिक स्पेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ चेंजेस। तो आ कौन देखिए तो बर्तमान यूनिट 4 की 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। व्हाट डू यू मीन बाय डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी। तो डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी मतलब कौन हो? तो व्हाट डू मीन डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी और डिस्क्रिसिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन व्हिच डेलिब्रेशन इज सेंट्रल टू डिसीजन मेकिंग। आ कौन इट adopts elements of both conscious decision making and majority rule. Deliberative democracy differs from traditional democratic theory in that authentic deliberation, not mere voting, is
द प्राइमरी सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी फॉर द लॉ। आपन अछि deliberative democracy is closely related to consultative democracy, in which public consultation on with the citizens is central to democratic process. नेक्स्ट आम क्वेश्चन कौन देखा पार्टिसिपेशन बा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी माने कौन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which citizens participate individually and directly in the political decisions and policies that impact their lives rather than through elected representatives. लोकମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଯେସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍ରେ ପଲିସିସ୍ରେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେୟାର ଲିଭ୍ସରେ ରେଦର ଦେନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ। ଆପଣ ନାମ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी माने कौन तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन माने कौन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी also known as indirect democracy is a type of democracy where elected people represent a group of people in constructive direct democracy। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି representative democracy means people participate indirectly in the decision making process ମାନେ decision making people ମାନେ indirectly participate होउଛନ୍ତି से indirectly कि भाई होउଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା indirectly participate होउଛନ୍ତି they choose their representatives through an election process ମାନେ କ'ଣ ସେ choose their representative election ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ representatives କୁ କ'ଣ ବାଛୁଛନ୍ତି ବା choose କରୁଛନ୍ତି these representatives meet and make decision for the entire population ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପୁରା entire population ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ decision make କରୁଛନ୍ତି decision making କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା representative democracy ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଆଉ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଏହାର PDF ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମିଳିଯିବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।